Good morning, students. Students, today we will discuss some mathematical problems, mental mathematics. Children, take out your books, lesson number 51. Now, set a time limit for this exercise and then solve these problems. Children, there are certain problems given and your question is asking you to set a time limit. Why? Because these questions has to be solved quickly with your presence of mind so that you can attempt all the questions which are there whenever you appear for some competitive exams. So your quickness is must in solving these questions. Let us start with the first one. 84 minus 32 is equal to dash plus 30. Children, I have given you the answer 22. But how this has come? If you subtract 84 minus 32, we get 52. 84 से अगर हम 32 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 52 और हमारे पास उन्होंने दे दिया है 30 प्लस। अब 30 में हम क्या प्लस करेंगे कि हमें 52 मिल जाए? तो इट इज 22. 30 plus 22 is 52. So our answer is 22. Next one. 10 plus 5 minus 2 into 5 divided by 2 is equal to dash. Answer I have written is 10. From where I have got this 10? Let us solve this. 5 plus 10. This is 15. Minus 2 into 5 is 10 divided by 2. 10 divided by 2, we get 5. And 15 is already there. 15 minus 5, we get 10. So the answer is 10. Next, third one. 7,500 grams is equal to dash kilograms. Now children, 1000 grams is equal to 1 kg. So, 7,500 grams is equal to 7.5 kg. Next one, fourth one. 5 square minus 4 square is equal to dash square. Now 5 square is 25 minus 4 square is 16. 4 into 4, 16. This we get 25 minus 16, 9. 9 is the square of 3. 3 square is equal to 9. 3 into 3 is 9. Next one, fourth one. Not fourth one, fifth one. The largest 4-digit number using 0573 is. अब हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए इन 4 नंबर्स को यूज करके। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हमारा है 7। फिर उसके बाद जो गिवन नंबर्स है उसमें 5, फिर 3, फिर 0. So the largest number we get using these numbers is 7530. Now the sixth one. How many seconds are there in 5 hours 30 minutes? 5 घंटे 30 मिनट में कितने सेकंड हैं? अब चिल्ड्रन 1 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 seconds. 1 minute is equal to 60 seconds. और तुम्हें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में 1 घंटा होता है, ये पता ही तुम्हें? तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे? 1 मिनट में तो 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में
कितने सेकेंड होते हैं? 60 इंटू 60 3600 60 मिनट्स मतलब 1 घंटे में हमारे कितने सेकेंड हो गए? तो 5 घंटे में कितने सेकेंड होंगे? दिस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 5 zeros are 0 फिर 5 zeros are 0 5 6 are 30 30 का 3 कैरी रहेगा 0 लिख दिया 5 3 are 15 प्लस 3 18 दिस मच सेकेंड इज देयर इन 5 hours। अब हमारा 5 hours के बाद फिर 30 मिनट्स है। अब अगर 60 मिनट्स में 3600 सेकेंड्स होते हैं तो 30 मिनट्स में कितने होंगे? इसका हाफ दैट मींस इसका हाफ कितना होगा? 36 का हाफ कितना होता है? 18 तो अब इसको प्लस करो ये हमारे 5 घंटे का हो गया ये 30 मिनट्स का हो गया। दिस इज द आंसर। कितने सेकेंड होते हैं? 5 घंटे 30 मिनट में। नेक्स्ट वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7। द स्मॉलेस्ट 3-digit number using 0, 8 and 9 is। अब सबसे छोटा नंबर बनाना है 0, 8 और 9 को यूज करके। अब ये कैसे बन सकता है? स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ 0 है लेकिन कोई नंबर 0 से तो शुरू कर नहीं सकते। अगर हमने 089 लिखा है इसका मतलब 89 हो गया, हमने 0 को हटा दिया तो हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो 8 से शुरू होगा। तो हमारा 8 सबसे स्मॉलेस्ट है फिर 0 फिर 9। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 809 है। अब 8th क्वेश्चन 76.45 माइनस 52.30 माइनस 24.15 इज इक्वल टू मैंने आंसर लिख दिया 0 लेकिन ये आया कैसे? अब इसको हम करके देखते हैं। ये मैंने एज इट इज लिख दिया यहां 2 माइनस है और माइनस इंटू माइनस इज प्लस मतलब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इन दोनों को प्लस करके देखते हैं क्या आता है। प्लस करते हैं तो क्या मिलता है हमें? 76.45 5 आ गया 1 + 3 4 4 + 2 6 5 + 2 7। अब इन दोनों को जब हमने प्लस किया इसको और इसको इन दोनों में बड़ा नंबर माइनस का है। वैसे भी माइनस माइनस दोनों ही माइनस का है तो हमने बीच में माइनस का साइन रख दिया। 76.45 minus 76.45 is equal to 0. That is why we have got the answer 0. Now the 9th one. Subtract the square of 5. 5 का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है किससे? From the square of 10. 10 के स्क्वायर से 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना है? 5 का स्क्वायर which is 25। अब आंसर कितना आया? 75। So this is the answer 75। 100 minus 25 हमें 75 आंसर दे रहा है। 10th one. Average of 20, 30, 40 and x is 25. What is the value of x? मतलब इन्होंने 3 नंबर दे दिया, चौथा नंबर हमें फाइंड आउट करना है और एवरेज बता दिया कि 25 है। तो वैल्यू ऑफ एक्स फोर्थ नंबर क्या है? 20, 30, 40 कितना बनता है?
90 plus 3 5 5 plus 4 9 plus x is equal to, अब ये 4 कौन से आया? नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4, ये 4 है तो इसलिए ये 4 बन गया। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स हमारे 4 है इसलिए 4 इंटू 25 100 आया। अब हमें x फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 100, जब इज इक्वल टू के उस साइड जाएगा ये नंबर का साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस इज 10। सो द वैल्यू ऑफ x इन क्वेश्चन नंबर 10 इज 10। आंसर हमारा 10 है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वन 11, 10% of 150 plus dash is equal to 9 into 45। अब 10% of 150 क्या होता है? 10% of 150, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, दिस इज 15 प्लस समथिंग इज 9 into 4। ठीक है, 9 into 4 is 45। अब हमें 45 चाहिए। अब ये 15 है हमारे पास जो हमें इधर से मिल रहा है 10% ऑफ 150। सो 15 प्लस 30 is 45। So the answer is 30. Next we come to the last one. Which is the largest number among -22, -2 and -50? इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर क्या है? -22, -2 और -50। अब जब हम ग्राफ में प्लॉट करते हैं, इस साइड प्लस होता है, इस साइड माइनस। अब ये जब हम प्लॉट करते हैं तो -1, ये -2, -3, ऐसे करते करते कहीं यहाँ जाके -22 आएगा और कौन सा नंबर दिया -50 कहीं यहाँ जाकर आएगा। इसका मतलब और 0 से जितना पास नंबर होगा वो उतना बड़ा होगा। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर है वो -2 होगा। होपफुली तुम्हें समझ में आया है। और फुटनोट में लिखा है द वर्ड प्लस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीनिंग मूव। लैटिन वर्ड से आया है प्लस वर्ड और इसका मतलब होता है मूव, ज्यादा। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल कम टू लेसन नंबर 52। Children, this lesson is rebus. Now, what is rebus? It is a riddle which you have to solve. There may be alphabets, there may be numbers. You have to think over it and solve them. A rebus is a riddle or a puzzle made up of words, pictures or symbols which forms other words or phrases. Try to solve these rebuses. Now, the first one. पहले वाले में तुम देख सकते हो क्या लिखा है? फनी फनी, वर्ड्स 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 वर्ड्स। इसका क्या बन गया? टू फनी फॉर वर्ड्स। नेक्स्ट वन, फीलिंग द टॉप। अब तुम टॉप को कैसे फील कर सकते हो? फीलिंग ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेज बन गया। नेक्स्ट इज ऑपरेशन। नाउ some alphabets are missing. If you think over the word, it becomes operation. Now the phrase which we can form with this is painless operation. Next is a box and Jack is written in the middle. Jack in the box. Next is quite. The phrase which we can form with quite is
quite right. Next is M1Y LI11F1E. अब इससे क्या बन सकता है? For once in my life. ठीक है? One से once, MY से my, LIFE life और phrase बनता है इसका for once in my life. Next, over and over. इसका क्या बनता है? Over and over again. Next children, we come to lesson number 53. Famous bridges. Here are 6 extremely dangerous bridges from across the world. Can you identify them using the help box? अब कुछ ब्रिजेस जो फेमस हैं वर्ल्ड की, उनकी पिक्चर्स दिखाई गई है तुम्हारे बुक में और तुम्हें हेल्प बॉक्स की मदद से उसको पहचानना है. Now the words given in the help box are Brooklyn Bridge, Tar Bridge, Millau Viaduct, Sydney Harbour Bridge, Rialto Bridge, Akashi Kaikyo Bridge. These are the names of some bridges and we have to recognize them. Now children, first one, it is one of Australia's most well-known and photographed landmarks. अब ये पहला वाला जो है ऑस्ट्रेलिया का ब्रिज है. You can see the picture. This bridge is Sydney Harbour Bridge. Sydney कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में. And the name of the bridge is Sydney Harbour Bridge. देख सकते हो आर्क शेप में ब्रिज है. Next one, located in Japan, it is one of the longest suspension bridge in the world. अब ये वर्ल्ड का longest suspension bridge है. It is Akashi Kaikyo Bridge. And जापान का है ये और ये 2 सिटीज को जोड़ता है. It links the city of Kobe to Iwaya. ये 2 सिटीज हैं जापान की और ये 2 प्लेसेस को जोड़ता है. Akashi Kaikyo Bridge. Next one, located close to the Tower of London, which gives it its name. It is an iconic symbol of London. Now the iconic symbol of London is Tower Bridge. Third one is Tower Bridge. Now this bridge is across the river Thames. Thames is a very popular river in London, just like we have Ganga in India. Thames लंदन की एक बहुत प्रसिद्ध नदी है. इस नदी के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, टार ब्रिज. नेक्स्ट वन, it connects Manhattan and Brooklyn and is a famous tourist spot in New York. Now this bridge is Brooklyn Bridge. ये न्यूयॉर्क में है और ये ब्रुकलिन को और मैनहट्टन 2 जगह को ये जोड़ता है. ब्रिजेस का काम ही जोड़ने का होता है, तो वो 2 प्लेसेस जो जिनको वो जोड़ता है, ये ब्रुकलिन ब्रिज, ये है मैनहट्टन एंड ब्रुकलिन. फिफ्थ वन, it is one of the oldest bridges spanning the Grand Canal in Venice. Now the name of this bridge is Rialto Bridge. It is Rialto Bridge. It is in Venice. And where is Venice? It's in Italy. It is Stone Arch Bridge. Stone Arch का मतलब है स्टोन से बना हुआ ब्रिज है और आर्क शेप में, सर्कल का आर्क आप जानते हो, उस शेप में बना हुआ है. नेक्स्ट वन, दिस रोड ब्रिज इन फ्रांस, अब ये फ्रांस के ब्रिज है.
is one of the tallest in vehicular bridges in the world. अब ये फ्रांस की जो ब्रिज है इसका नाम है one of the tallest vehicular bridges. It is Millau Viaduct. ये ब्रिज का नाम है. It is across the George Valley in South France. George Valley पर है ये और ये South France में है. Now that's all about bridges in this chapter. Next we come to Think Green, Save the Planet. तुमने ये कॉन्सेप्ट सुना होगा. बार बार कहा जाता है कि we have to save our planet. We should stop polluting it so that we can stay healthy. It is for the welfare of mankind as well as for the animals. हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुनते हैं. इसके अलावा हम सुनते हैं कि बहुत सारे जानवर, उनकी स्पीशीज, प्लांट्स वो लुप्त होते जा रहे हैं. वो मतलब धरती से उनका स्थान खत्म होता जा रहा है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन. सो इस लेसन में कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं जिसको कि आपको ठीक से पढ़ना है और समझना है. फर्स्ट है इनऑर्गेनिक. अब इनऑर्गेनिक क्या होता है? मैटर्स विच डू नॉट हैव कार्बन, दे आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक मैटर. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक. ये सब तुम आगे चल करके पढ़ोगे. ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिक मैटर जिसमें कार्बन होता है. एनी कंपाउंड विच हैज कार्बन विच इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसकी मेन जो फीचर्स हैं उसको तुम्हें ध्यान में रखना है. बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वर्ड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज, वो चीजें जो सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं, वो उसमें जा करके ऐसा नहीं होता कि वो मिक्स नहीं होता. सपोज प्लास्टिक हम फेंकते हैं, टॉयज वगैरह को प्लास्टिक का मटेरियल हम मड में रखते हैं तो वो उसके साथ डिजॉल्व नहीं मिल ली जाती है, तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गई. लेकिन अगर वेजिटेबल्स, वेस्ट मटेरियल ऑफ वेजिटेबल्स अगर हम सॉइल में मिलाते हैं तो वो कुछ समय के बाद उसमें रॉटन होकर सड़ करके उसमें मिक्स हो जाता है, तो वो बायोडिग्रेडेबल है. Biological diversity. It is the variety of plants and animals live in this world. Next is biomass. Total amount of living organisms in a given area. Biosphere, layer of the earth where life is possible, where life can exist. Next, ecosystem. It is a combination of all living things that live and thrive in a certain environment. मतलब इकोसिस्टम में सिर्फ मैन नहीं है, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स, सारी चीजें जितनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहती हैं. उन सब चीज़ों के कॉम्बिनेशन को इकोसिस्टम कहते हैं. एंडेंजर्ड स्पीशीज, अभी मैंने बताया बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, एनिमल्स की, बर्ड्स की. इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है. नेक्स्ट है एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? वो एक्सटर्नल फैक्टर्स जो किसी भी चीज के अराउंड है, हमारे अराउंड एनवायरनमेंट है. जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स और ऐसे कंडीशंस जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमें प्रभावित करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड चीजें. अगर कोई फैक्ट्री है उसका धुआं निकल रहा है तो हमें अफेक्ट करता है, तो वो नेगेटिव इफेक्ट देता है हमें. सच काइंड ऑफ थिंग्स, पोल्यूशन शुड बी स्टॉप्ड. एंड अगर हमारे आसपास ग्रीनरी बहुत है तो हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है तो हम हेल्दी रहेंगे. तो हमारे चारों तरफ का एनवायरनमेंट, जो भी चीज़ें हमारे चारों तरफ है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड चीज़ें हों, जो लिविंग थिंग्स को, उस तरह के इकोसिस्टम में रहने वाले चीज़ों को इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, उसको एनवायरनमेंट कहते हैं. नेक्स्ट है हैबिटाट. हैबिटाट इज द लिविंग प्लेस, द होम ऑफ एनी लिविंग थिंग, चाहे whether it is plant, whether it is animal, human beings, it is
the place where it lives is called its habitat. जैसे हम फॉरेस्ट को काट देते हैं तो हम प्लांट्स और एनिमल्स के हैबिटाट को हम खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि अपने स्वार्थ के लिए ज़मीन तो वहाँ से ले रहे हैं, बट वो जो हमारे इकोसिस्टम में बैलेंस बनाता है उसको हम खराब ना करें। तो हमें फ्रेश एयर भी मिलेगा, तो नहीं रहेंगे तो हमारा जो बैलेंस है एनवायरनमेंट का वो बिगड़ जाएगा। टॉक्सिक मीन्स समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर अस, जो पॉइजनस होती है उसको टॉक्सिक कहते हैं। नेक्स्ट है वेटलैंड्स होती हैं जैसे मार्शेस, स्वैम्प्स, पानी के और कीचड़ के जो दलदल बने होते हैं उसको मार्शेस कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अर्थ्स किडनी बिकॉज दे हेल्प इन द फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। एफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, planting of forest where there were none. Acid rain, जब फैक्ट्रीज में से बहुत सारा गंदा धुआं निकलता है वो कंबाइन होता है जाके वाटर वेपर के साथ और दे फॉर्म एसिड, और वही फिर रेन के फॉर्म में जब वो नीचे गिरता है तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। इट इज हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, एनिमल्स, प्लांट्स, जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में सबके लिए वो हार्मफुल है एसिड रेन। नेक्स्ट वन इज एरिड। एरिड मीन्स वेयर रेनफॉल इज वेरी लो, डिजर्टेड एरियाज को एरिड लैंड कहते हैं, एरिड रीजन्स कहते हैं। और वहाँ पे अगर तुम्हें खेती करनी है तो तुम्हें इरिगेशन की ज़रूरत है, तुम्हें पानी देना होगा बिकॉज रेनफॉल इज नॉट देयर। नेक्स्ट है CFCs, क्लोरोकार्बन्स, वो कंपाउंड जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं उसको फ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। और ये CFCs जो है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, नष्ट करता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन क्या है? प्रोटेक्टिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर अराउंड अस। It is an act of reducing the rate of consumption of natural resources so that we can benefit the future generation. Next is deforestation. Deforestation is again harmful, बिल्कुल एफोरेस्टेशन का उल्टा है। एफोरेस्टेशन में हम पेड़ पौधे लगाते हैं और डिफोरेस्टेशन में हम फॉरेस्ट को कट करते हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस का मतलब है फॉर सेल इन द मार्केट। ये इसके अलावा और भी कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। ड्रॉट पड़ना मतलब सूखा पड़ना, अगर रेनफॉल नहीं होगा तो ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ेगा। रेनफॉल कब नहीं होगा? जब प्रॉपर कोई चीज़ का नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि अगर रेनफॉल किसी जगह पे नहीं हो रहा है, इट लीड्स टू द scarcity of water in that area, there is no crops there, crops जो है वो ग्रो नहीं करेंगे और वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। नेक्स्ट इज एमिशन। द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर इज एमिशन। इरोजन होता है जैसे अगर आपने कहीं पे पानी डाला तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें बह जाती हैं, सॉइल, इसके अलावा बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स वगैरह वो सब चीज़ें पानी के साथ बह के निकल जाती हैं, तो इस चीज़ को इरोजन कहते हैं। तो और ट्रीज जो है वो अगर हम कट करते हैं तो इरोजन ज़्यादा होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, क्योंकि रूट्स जो है वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। पेड़ों के जो रूट्स है वो सॉइल को बांध के रखती हैं, और अगर इरोजन हो गया, रेनफॉल हुआ, वहाँ पेड़ पौधे नहीं है तो वो सारा मड पानी के साथ बह के कहीं और चला जाता है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे जो है वो है ही। इसलिए सो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज शुड नॉट बी देयर सो दैट वी कैन स्टॉप इरोजन। एंड इरोजन इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन लाइफ। बहुत सारे हजार्डस वेस्ट होते हैं, हमें पता है, फैक्ट्रीज डिस्पोज ऑफ करते हैं, जो रिवर्स में छोड़ देते हैं, जो कि मेरीन लाइफ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। जो फिश वगैरह है या कोई भी टर्टल वगैरह, कोई भी फिश
मेरीन लाइफ वाटर रिवर्स में है, वाटर बॉडीज में है, हैजार्डस वेस्ट मटेरियल जो हम उसमें डिस्पोज ऑफ कर देते हैं फैक्ट्रीज के थ्रू, दैट शुड बी स्टॉप्ड। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो तुमने देखा होगा फार्मर्स जो है अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं टू किल द पेस्ट, जो कीड़े मकोड़े लग जाते हैं पेड़ पौधों में, अनाज में, उसको किल करने की जो मेडिसिन है उसको पेस्टिसाइड्स कहते हैं। रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल कुछ प्रोडक्ट्स रिसाइक्लेबल होते हैं, जैसे प्लास्टिक के मटेरियल, उसको रिसाइकल करके उसका दूसरा मटेरियल बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको वेस्ट नहीं करना चाहिए डिस्पोज ऑफ करके, बल्कि उसको रिसाइकलिंग करके उनको यूज़ किया जा सकता है, जिससे उनको ज़्यादा ना प्रोड्यूस करना पड़े जो हमारे एनवायरनमेंट को, जैसे प्लास्टिक इज नॉट गुड फॉर द एनवायरनमेंट। अगर हम उसको जलाते हैं तो भी धुआं जो देता है तो वो भी हार्मफुल है। सो रिसाइकल की चीज़ों को दोबारा से यूज़ कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। What are ultraviolet radiation? UV electromagnetic radiations होते हैं ये, in the wavelength range of 200 to 400 nanometers. These are also known as ultraviolet lights. These are some of the terms which are used in this lesson, on which you have to think over, and you have to think whether it is harmful for us or it is beneficial for us, and accordingly you should act. You must know Earth is our home and we should protect it. That's all, children. Thank you. Do these lessons and then complete your work and send me. Thank you.